Hello friends, so today's video is regarding my recent experience on installation of pressure pump. So I live in first floor and generally we faces the issue of low pressure in our bathroom and kitchen. So past few weeks we had a serious drop in the pressure and we were not able to manage it. So we thought that on last Friday I thought that let's install the pressure pump. So I studied various blogs like which pressure pump should be suitable and which brand should I go for. So after visiting few shops and gathering experience from various friends, because nowadays the builder floors they do must install the pressure pump. So what I got to know is like there are few brands like Kirloskar pumps and Havells and few more were there. So I selected the Havells one based on the feedback from one of my friend and my local dealer. And now while I'm speaking it has already been installed and I will be sharing my experience of unboxing and installing. So just to give you a brief, so why I need it. So as I told you that I live on the first floor and the overhead tank is installed on the second floor. So due to overhead tank on the second floor and I living in first floor, we get very less potential energy, which is energy due to height. So we don't get as much as pressure which is required for our normal routine. So again, how this pressure pump solves our problem is, so as this pressure pump is basically a motorized fan and the blades of this fan impeller rotates and they increases the water movement. So this is how it works. Detailed, of course, you can YouTube many videos over there. So now to cut it short, like we bought a pressure pump. This pressure pump has one inlet and one outlet. So one inlet shall be connected to our water overhead tank and outlet shall be connected to all of our water outlet sources like bathroom pipe and kitchen pipe. So let's start this video with unboxing and later installation. And I will be also putting a link below in the description for Amazon from where which I purchased and the article which I read and got more info about our pressure pumps. Guys, so आज हम प्रेशर पंप की अनबॉक्सिंग करते हैं. सो हमारे साथ है प्लम्बर वीरेंद्र कुमार. वीरेंद्र जी कैसे हैं आप? बढ़िया है जी, फर्स्ट क्लास। चलिए आप ज़रा खोल के दिखाइए ये प्रेशर पंप दिखता कैसे है. ठीक है। ये देखो जी, ये क्या चीज़ है? ये पानी जो कचरा वचरा ना फंसे उसके लिए एनआरवी है। ये अच्छा एनआरवी है, नॉन रिटर्न वाल्व स्ट्रेनर टाइप. चलो ठीक है. और ये है अपनी मोटर, प्रेशर मोटर। ये है प्रेशर मोटर. ओके, तो ये इसमें कितने हॉर्स पावर की है? ये आधा की है। आधा की है. ओके, ज़रा घुमाइए इसको. ये क्या है मीटर सा? ये मीटर है जी। ये क्या काम आता है? ये मीटर ये पॉइंट बताएगा। अच्छा, ओके ओके, बिकॉज आई सी 2.6 बार और 1 पॉइंट बार डिफरेंशियल. सो ओके, अच्छा, और घुमाइए इसको. ओके, ठीक है ठीक है. और इधर क्या है ये है खींचने का। खींचने का. हाँ, ये खींचने का, ये फेंकने का है। ओके, तो ये इनपुट है, यहाँ से पानी अंदर जाएगा. हाँ, ये ऊपर फेंकेगा और ये यहाँ से सप्लाई होके हाँ, हमारे सारे बाथरूम में जाएगा। हाँ, ओके ठीक है. इसको अब कहाँ लगाने वाले हैं हम, ज़रा वो बताइए. यहाँ टंकी के पास लगाने का ना, इसकी जगह यहाँ पे प्लेस करेंगे. ओके यहाँ पर लगाएंगे जी। ओके, तो ये हमारी दो टंकी है. टंकी फर्स्ट फ्लोर की, ग्राउंड फ्लोर की, और ये यहाँ पे प्लेस कर देंगे. इसको एक इलेक्ट्रिक कनेक्शन लगेगा, वो हम दे देंगे इस तार के यहाँ पे. ओके, एंड इसका आउटपुट जो यहाँ से निकलेगा, इनपुट तो ये है इसका, और ये यहाँ इससे यहाँ से एक कनेक्शन आ जाएगा, एक इस पाइप से आ जाएगा, और यहाँ का आउटपुट है फिर वो हमारे बाथरूम की सप्लाई में जाएगा. ओके,
ये भी दिखाएंगे कुछ मिनट बाद. Guys, finally our pressure motor is installed. As you see, I told you that there is one inlet and one outlet. So if you see this one, this is an inlet, this inlet, and you see the sound. This sound comes when someone opens a tap. When someone opens a tap, pressurized water comes at a high speed. So again I told you, like, this is the inlet, the down one, and the up one, this pipe is an outlet. So in our case, this outlet is being split into 2 points, one this point and one this point, and this is the inlet.